Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Cricket Mehfil. I am very happy for today's episode because we have with us one of the shining lights of Pakistan cricket. People ask me, why do you say shining lights? Because it's very important to also look to the future. सिर्फ आज को मत देखें, सिर्फ माजी पे मत फोकस करें, मुस्तकबिल का भी सोचें. I am very excited to be joined by Hijab Zahid today. Hijab का ताल्लुक इस्लामाबाद से है. ये प्रोफेशन से एक कंप्यूटर इंजीनियर है और एक सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर है. 6 साल की उम्र से क्रिकेट देख रही हैं और वॉइस ऑफ पाकिस्तान में टॉप 3 में आई थी एंड शी वाज द ओनली फीमेल कंटेस्टेंट टू मेक इट दैट फार. सबसे पहले हिजाब, वेलकम टू द शो. हाउ आर यू? Thank you so much, Hassan. And I am good. I hope aap bhi khairiyat se hoge, and hello to everybody who's listening. Thank you so much. Now, Hijab, tell me about your passion for cricket. You know, पाकिस्तान में अभी भी एक थोड़ी सी परसेप्शन है कि खवातीन क्रिकेट देखती नहीं है, खवातीन क्रिकेट में इंटरेस्ट. How untrue is that in 2022, and how did it start for you? Where did this craze, this love, this interest in cricket come from? So that's actually a very sensitive topic as well. Agar aap publicly baat karein to women and their role in cricket and their interest in cricket as well. I would say that this is very untrue. Women are very much interested in sports, especially cricket, क्योंकि हमारे मुल्क में इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है. We have a infrastructure जो कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करता है as compared to other sports, I would say. इस वजह से it's widely popular among men, among women, among old people, बच्चे. मैं 6 साल की उम्र से देख रही हूँ, मेरा भाई 6 साल की उम्र से देख रहा है, मेरे बहन भाई सारे. So I would say कि जो cricket is kind of in our DNA, वो हमारे ब्लड में है. उसमें जेंडर मैटर नहीं करता, उसमें एज मैटर नहीं करती, उसमें नॉलेज मैटर नहीं करता. यू जस्ट लव द गेम. और एज अ पाकिस्तानी यू फील प्राउड एज वेल, क्योंकि हमारी टीम और हमारे मुल्क ने बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स की हैं इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट दैट वी आर प्राउड टू से कि भाई यस, आवर टीम इज समथिंग दैट वी लुक फॉरवर्ड टू सी ऑन इंटरनेशनल लेवल. और आपने मुझे बताया कि आपके वालिद साहब को क्रिकेट का बड़ा शौक था और उनकी बड़ी इंटरेस्ट थी कि आप भी क्रिकेट ना सिर्फ देखें बल्कि खेलें भी. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज सच इंकरेजमेंट फ्रॉम होम? कितना फर्क पड़ता है जब आपके वालिदैन आपको इंकरेज करते हैं कि इस गेम को देखो, इसको खेलो, इसमें अगर आपकी कोई इसके बारे में पैशन है तो उसको परस्यू करो? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. माय डैड वाज वेरी पैशनेट. बहुत ज्यादा उनको शौक था क्रिकेट का. वो खेलते भी थे और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे. और वो बिलीव करते थे इस बात के ऊपर कि इट डजंट मैटर इफ यू आर अ मैन और अ वुमन. अगर आपको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, देन यू शुड बी एथलेटिक. You should be playing that sport. You should be watching that sport. और आपको एक active participation होनी चाहिए उसके अंदर. Same goes for my mother. My father passed away when I was very young. So my mother never actually diminished that love for cricket that I had. She always supported that. और obviously मैं उसको professional level पे नहीं खेल सकी because we were in different circumstances. लेकिन हमेशा से ये एक dream रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को represent किया जाए international level पे, national level पे. और आई एम ग्लैड कि वो मौका अब मुझे मिल रहा है एंड आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह आगे भी मिलेगा. लेकिन यस, द सपोर्ट दैट यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स एंड एवरीबॉडी अराउंड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया. हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक फीलिंग है कि जी सिर्फ वो लोग जो प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल चुके हैं, सिर्फ उनको क्रिकेट के बारे में पता है. व्हाइल आई एम नॉट डाउटिंग द एडवांटेज ऑफ हैविंग बीन अ फॉर्मर फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल लेवल क्रिकेटर, डोंट यू थिंक थोड़ा सा अनफेयर है ऑन दोज ऑफ अस हु हैव नॉट बीन एबल टू प्ले क्रिकेट? क्या हमारी लगन किसी तरह से कम है? क्या हमारा टेक्निकल नॉलेज किसी तरह से कम है? I mean, just because someone didn't play professional cricket, does that mean they can't go on and make a career talking about professional cricket? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली उनको नॉलेज नहीं है या उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है या वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्रिकेट को किसी और जो है ना एस्पेक्ट से, rather than just playing for Pakistan or playing for their own country. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, एडवांटेज है उन लोगों को जिन्होंने ये गेम खेली है, बिकॉज दे नो द ग्राउंड रियलिटीज. उनको पता है कि what it's like to be at the center of a stadium and play and represent your country, and what kind of pressures and what kind of things come into your mind and how you tackle those. Definitely उन लोगों का नॉलेज हमसे probably ज्यादा है और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी टेक्निकल नॉलेज भी ज्यादा है क्योंकि they were actually present in that game. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बाहर बैठकर देख रहे हैं उस गेम को, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिटरली, क्योंकि हम स्टैट्स पे जाते हैं, हम अपने जो है वो पुरानी गेम्स जो है वो देखते हैं, कमेंटेटर्स को सुनते हैं, एनालिस्ट को सुनते हैं, तो हम एब्जॉर्ब करते हैं वो सारा कुछ.
हमारी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो ज्यादा हो जाती हैं. सो कभी कभार ऐसा होता है कि हम वो चीजें नोटिस कर जाते हैं जो दूसरे शायद नहीं कर पाते. सो आई वुड से कि यस दे डू हैव एन एज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज वी हैवंट प्लेड इट प्रोफेशनली कि हम उस पर बात नहीं कर सकते. हम बिल्कुल कर सकते हैं. पाकिस्तान वॉइस ऑफ क्रिकेट, हिजाब, मैंने वो क्लिप देखा जब जो जिससे एक्सपेक्टेशन थी कि लोग इस पे कमेंटेट करेंगे. भाई मेरे से तो नहीं किया गया. आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. आई मस्ट हैव हैड अबाउट 50 tries, 60 tries before my wife told me बस कर दो यार, कोई तुम्हें नहीं सुनने वाला. It was a very high intensity clip. There was a lot of emotion in a very short period of time. तो for the fact that literally लाखों ने कोशिश की और आप टॉप 3 में पहुंचे, आपको क्या लगा कि आपके क्लिप में वो क्या था? What do you feel you brought to your rendition of those moments that stood out from the fact that literally millions of people across the world, not just Pakistan, applied for it, but only very few made it? What do you think made your clip stand out? ये तो आपको रमीज राजा से पूछना पड़ेगा क्योंकि ही वाज द वन हु जज्ड अस, और उन्होंने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने टॉप 5 में सेलेक्ट किया. एंड देन आई गॉट अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम एवरीबॉडी अराउंड मी, क्रिकेट फ्रेटर्निटी से भी, और मेरी अपनी भी जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनसे भी मुझे बहुत 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 अप्रिसिएशन मिली. एक चीज है कि दिस इज माय डेब्यू, तो आई एक्चुअली डिडंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू कंसिडर के आई विल बी सिलेक्टेड या मैं होंगी या नहीं. दिस वाज जस्ट माय फर्स्ट ट्राई टू सी इफ डू इट. एंड अल्लाह का शुक्र है कि जो सबमिशन, जो क्लिप हमें दिया गया था, वो जब मैंने सबमिट कराया, that was selected in top 20, और उसके बाद हम लोग को ऑडिशंस में बुलाया गया लाहौर, which was definitely so high pressure. मैं आपको बता नहीं सकती, I was sweating through my clothes. और मतलब I could literally hear my heartbeat जिस वक्त मुझे स्टेज पे बुलाया गया था. But I would definitely say this कि जितना कॉन्फिडेंस हमें उस वक्त और जितना कंफर्टेबल हमें किया रमीज राजा ने उस वक्त उस सिनेरियो में, वो that was very helpful. उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया बिफोर गोइंग ऑन एयर, बिकॉज इट वाज जस्ट वन ट्राई, वी कैन नॉट डू अ रीटेक. वो एक लाइव कमेंट्री थी, आपने एक ही ट्राई में करनी थी. व्हाटएवर यू आर सेइंग इज गोना बी रिकॉर्डेड एंड यू आर गोना बी जज्ड ऑन दैट. कोई रीटेक्स नहीं, कुछ नहीं. सो ही मेड श्योर दैट वी वर ऑल ओके बिफोर वी वेंट फॉर आवर क्लिप. और मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आपने प्रैक्टिस कैसे किया, आपने क्या किया. मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की. लाइव कमेंट्री की मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूंगी, मुझे बताइए. मुझे तो पता भी नहीं था कि स्क्रीन पे आएगा क्या. लेकिन ये कि आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, और आई थिंक मेरी अम्मी की दुआएं थी मेरे पीछे जिन्होंने वहां तक पहुंचा दिया मुझे. एब्सोल्युटली. अब हिजाब बताएं कि वो जो ओरिजिनल एक्चुअल क्लिप था जो पहले सबमिशन थी, उसकी आपकी भी कुछ 60-70 रीटेक्स थी या वन रीटेक एंड गुड टू गो? मैंने लिटरली डेडलाइन के बहुत पास आके वो सबमिट किया था, बिकॉज आई वाज बिजी एट वर्क. और मेरे भाई ने एक्चुअली मुझे रिमाइंड कराया कि डू यू नो व्हाट डेट टुडे इज. टुडे इज द लास्ट डे फॉर सबमिशन, यू हैव गॉट टू डू इट. सो वी डिड लाइक हिम एंड आई, वी वेंट बैक एंड फोर्थ. हमने थोड़ा सा आपस में प्रैक्टिस किया, और उसके बाद ये कि वी जस्ट रिकॉर्डेड वन एंड वी सेंट इट इन, क्योंकि हम वी वर लिटिल बिट शॉर्ट ऑन टाइम. तो हमने रिकॉर्डिंग तो एक ही की थी, बट आई डिड हैव अ लिटिल बिट प्रैक्टिस विद माय ब्रदर. ही इज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट एज वेल, और ही इज राइट नाउ गिविंग ट्रायल्स फॉर under 16 as well. So yeah. Zabardast. So it definitely runs in the family, and I know your father's looking down and feeling very proud to see his kids, mashallah, continuing this. तो अब आप टॉप 3 में आ गई हैं. आप पहले प्रेशर की बात करें कि टॉप 3 में पहुंच के तो the pressure has to be completely different, because now you're that close to touching your, reaching your final destination. Ijab, how much did you feel at all in any way? How much do you think were people judging you a little bit extra on your gender? Do you think there was more pressure, or don't you think that was not the case at all? Just the fact that there were 3 Pakistanis trying out for a very important post, one person would get it. Because abhi bhi, I personally, I could be wrong, feel कि हमारी expectations थोड़ी unrealistic हो जाती हैं when it comes to people who are involved in cricket who are female. There is this back of the mind, बहुत सारे लोगों का, तनी जी इनको तो इतना पता नहीं होगा, इनके पास इतने मौके नहीं होंगे, इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा. Did any of that come through at all, or no? You were just focused at that time कि नहीं भाई, there's 3 of us, any one of us can go on and win it. ये हसन दोनों चीजें थी इसके अंदर. I came across all kinds of people. जब हमारा वो बीच में 2-3 दिन का हमें टाइम मिला था, जहां पर we had to collect votes and we had to send our clips to people to watch, और उसमें हमें टाइम दिया गया that we can advertise our clip and ask people to watch it and vote for us. वो जो टाइम था, was probably the most anxious time I've ever spent in my life. इतनी एंजाइटी मुझे लाइफ में कभी नहीं हुई जितनी मुझे उन 2-3 दिनों में हुई थी. And during that period I came across so many different kind of people.
definitely there were people who kind of said that I am going to play the woman card to win. वही आपकी वाली बात के obviously उन्होंने gender representation होनी चाहिए और सारा कुछ होना चाहिए. She's gonna cash on the fact that she's a woman and she has made it to this stage to win the competition. ऐसे comments भी आए. There were people who were very very honest about my audition clip. उन्होंने मुझे feedback भी दिया, advice भी दी, which I am absolutely thrilled to get. आप भी उसमें से एक थे. तो सारे के मैं बहुत I tried to surround myself with a lot of positivity उस time पे, क्योंकि majority of people were supportive. Yeah, there was a small section of people जिन्होंने थोड़ा सा मेरे लिए वो time मुश्किल भी बनाया by saying कि मुझे knowledge नहीं है cricket की, मेरा काम नहीं है ये भी सुनने को मिला मुझे, ये लड़कियों का काम नहीं है. और मतलब ये कि वही आप वो थोड़ा से apprehensive हो जाते हैं with women representation in cricket. हालांकि होना नहीं चाहिए. Now we have amazing commentators. अरूज मुमताज हैं, सना अमीर हैं, मरीना इकबाल हैं, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ. I'm in awe of her knowledge of cricket. जैनब अब्बास हैं. तो इन सब के होते हुए अब इतना apprehensive होना नहीं चाहिए हमारी आवाम को towards women and towards what they're trying to bring. तो ये तो चीज़ हमें काफ़ी, ये competition में आने से पहले भी कभी अपना व्यू दे दूँ ट्विटर के ऊपर, कोई कुछ एनालिसिस दे दूँ क्रिकेट का, so you get to hear you're a woman, what do you know? So yeah, it was actually both kind of people, but majority was positive. चलें, जो लोग पॉजिटिव नहीं थे आपको बता दें कि वुमेन कार्ड जो है एटीएम में नहीं चलता, तो एट द एंड ऑफ द डे किसी से उसको इतना ज्यादा फायदा नहीं होता. अब वापस आते हैं हिजाब टू अनदर थिंग. यू स्पोक अबाउट द रोल मॉडल्स हियर इन पाकिस्तान. यू स्पोक अबाउट brilliant Aruj Mumtaz, Sana Mir, Marina Iqbal, who I've been very lucky to have worked with, Zainab Abbas, trailblazers, trendsetters. Internationally, who are the people who you have looked up to? Because अब हम देख रहे हैं बहुत सारे लीग्स में और बहुत सारे कवरेज में we are seeing a lot more female commentators, and they are more than holding their own. They have their own fan bases and people are loving their input. Yep. So anyone from around the world who you look at and say I'm really inspired by them? Isha Guwa is one. I've been told that I resemble her, so I do look up to her as well. उसके अलावा ये है कि I do look up to Sana Mir as well. मुझे उनका analysis, उनके जिस तरह से वो समझाती हैं आपको game की knowledge और सारा कुछ, मुझे I look up to her as well. और अगर आप favorite commentator की बात करें तो अगर international level पे देखा जाए, I'm a big fan of Nasir Hussain. और उनकी जो lines होती हैं, they are you usually remember them for a decade or so. So that's what I want to do. Commentator वो होना चाहिए जो आपको एक ऐसी लाइन दिला दे कि आपको जब भी वो लाइन सुने ना, आपको you go exactly to that moment in that particular game जब वो हो रहा था. And that's something that Nasir Hussain does. So I really, really look up to those people. Absolutely. The great Richie Beno and his, line for Wasim Akram in 1992, that subtract Lewis from that list. Akram is on a hat trick, and I think it was Fazir Muhammad when he said about Shannon Gabriel that why would you do that? That stays with me on a positive note because we finally won a series in the West Indies thanks to one mistake. अब आते हैं हिजाब towards the fact कि लोग तो उन लोगों को एड्रेस्ड है जो कहते हैं आपको नॉलेज नहीं है. तो आपने तो पूरा पिंडी टेस्ट मैच जाके अभी सारा अटेंड किया. You were there for the whole game. You were watching the game, watching it with so much passion. What was that experience like? What was it like going to the stadium? हमने बड़ा सुना कि ट्रैफिक वगैरह के बड़े प्रॉब्लम्स थे. कोई any memories from the game? Were you one of the people who was urging Warner to dance? और या वो खुद ही उसको उस वक्त पे कोई प्रॉब्लम चला हुआ था और वो डांस कर रहा था उस तरह से? And what was your overall experience like? Overall experience मेरा बचपन से लेके अभी तक, every time that I've been to the stadium is so memorable. Mashallah, I'm one of the lucky people who have actually seen a lot of live games of cricket. पाकिस्तान में obviously बहुत ऐसा international cricket नहीं हुई है, so we've been deprived of that. But मैंने काफी ऐसा UK में गुजारा है, तो मैंने वहाँ पर भी बहुत सारी live games देखी हैं. Stadium feels like a home, to be honest. Every single moment that I spend there is memorable. Every single person that I interact with there, चाहे हम स्टेडियम से चीखें क्यों ना मार रहे हो, and they are not able to hear us, it's still a memory for us. वो हमें याद रहती है, although it's just a wave from the star players or our own players or the foreign players, वो एक wave भी आपको याद रह जाती है कि I remember उस मैच में मुझे उस फलाने बंदे ने wave किया था. So they acknowledge that they have fans and we were there to support them. और experience की बात है, PSL भी मैंने देखा live, काफी सारी games लाहौर में, लाहौर लेग जो था आपका,
It was wonderful. I would give props to PCB जिस तरह की arrangements उन्होंने की हैं PSL में भी और अभी पाकिस्तान की जो सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ उसमें भी they were very accommodating, they were very understanding. Obviously हम समझते हैं कि security में obviously they have to be very diligent when it comes to security. वो उसके बावजूद भी they have made the whole situation, the whole experience so pleasant for each and everybody. So yeah, definitely stadium का experience, there's nothing like that. Any memories from this game? Any positive memories? Did you enjoy Pakistan putting, not losing that many wickets? Maybe Noman's six for, was there a moment? Any particular thing that stands out? Shaheen's first over definitely stands out. That was something that I've wanted to watch for a very long time. Babar's straight drives were definitely something that stood out. Or Imam Ullah ki century mujhe yaad hai. That was a very special moment. Or for the whole crowd, for the whole stadium, the chairs and everything was just fantastic. Or the kind of welcoming environment that was the Pindi Stadium. It was so good even for the Australians that they were cheering upon every single boundary, even for them. They didn't care that that the team is playing against our team or that they're playing against our country. They were just enjoying the cricket, and that's what you love to see. Absolutely, you do so. Now, Hijab, thank you so much for taking out the time to come on and talk about all these amazing things. But before I let you go, I really want to ask you something. It's very important. I know you are a very strong advocate for the representation of women in sport. What can we do better? What does Pakistan, not just Pakistan cricket, what does Pakistan need to do better to make sure that more of our girls are able to come and take part in whether it's watching the cricket, whether it's presenting the cricket, whether it's playing the cricket? Because clearly there's, even with a lot of positives, there's still a lot of work that needs to be done. What can be done? So when it comes to women, it's a bit of a sensitive topic as well, क्योंकि हम as an औरतें आपको clearly बता सकते हैं कि हमारे experiences कैसे रहे हैं. So coming into a field that's related to media and that's related to production or इस तरह की चीजें when you're on the front line and you're on different social medias or on TV and stuff like that. So थोड़ा सा apprehensive होती हैं हमारी अपनी families भी अपने मतलब बच्चियों को भेजने से उस फील्ड के अंदर. और उसकी रीजन यही होती है कि they feel that it might not be very safe. I would say कि वो narrative अब आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है with women, more and more women coming into this profession and माशाल्लाह making it to a good level, अच्छे level पे वो इस वक्त काम कर रही हैं. तो हम लोगों को बहुत ज्यादा इससे जो है ना वो encouragement मिलती है कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, हमें अपनी सिक्योरिटी की परवाह होती है, हमें अपने इमेज की भी परवाह होती है, हर चीज होती है, लेकिन ये कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट द पैशन फॉर द गेम दैट टेक्स यू ओवर टू दैट स्टेज. वो जो पैशन है ना गेम का, वो डिमिनिश नहीं होना चाहिए. बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आते भी हैं, आ भी चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दें, अपना पैशन अबैंडन कर दें. वो नहीं आप कर सकते. सो मेरा अगर मैं किसी को कहूंगी, इनकरेजमेंट करूंगी कि आप इस फील्ड में आए या आपको अगर क्रिकेट पसंद है तो यू कैन आप जर्नलिज्म में आ जाएं, प्रेजेंटर आ जाएं, किसी भी तरह अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं क्रिकेट में तो जरूर हों. क्योंकि आई फील के अब जो हमारा करंट मैनेजमेंट है जो पीसीबी की है, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इंक्रीजिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन. और वॉइस ऑफ पाकिस्तान एक पहला स्टेप था टुवर्ड्स दैट, व्हिच वाज एन अमेजिंग इनिशिएटिव. बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ और दैट्स द ओनली रीजन आई एम सिटिंग हियर राइट नाउ विद यू. तो देखें, अगर मैं आ सकती हूँ तो इंशाल्लाह और भी बहुत सारा टैलेंट आएगा, बहुत सारी बच्चियां आएंगी एंड यू सी के जो हमारी ये जो आवाम है जो थोड़ी अप्रीहेंसिव है ना कि औरतों को क्रिकेट का शौक नहीं होता, औरतें क्रिकेट खेल नहीं सकती. ऑल्दो हमारी वुमेन्स टीम भी गई हुई है इस वक्त वर्ल्ड कप में और वो भी खेल रही है वहां पे, दे आर एन इंस्पिरेशन माशाल्लाह. लेकिन ये कि थोड़ा सा लोगों को अपना आई वुड से कि थोड़ा सा दिमाग खोल के इसको करें. यू डोंट हैव टू गेट कीप दिस गेम, दिस इज फॉर एवरीबॉडी टू एंजॉय. चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है या चाहे वो बूढ़ा है. You don't have to be 100% correct, technically correct to enjoy a game of cricket or be passionate about it. So that's basically what I'll say to them. So Hijab, I just want to say it's been an absolute pleasure to have had the opportunity to talk to you. You are an inspiration. I know for a fact, I'm very confident that inshallah going forward, you will be involved with whether it's talking about cricket, whether it's representing cricket, whether it's writing about cricket, all of these things. Because your passion and the fact that you are so committed to all of this shines through. I think it's an exceptional achievement to make the top 3 of something where literally, I'm guessing 25% of all Pakistanis around the world would have,
gotten involved in. It's a brilliant achievement for you, for your family. So all the best to you. You are someone who, inshallah, has the potential to inspire all our girls to go ahead and do better. And I hope they will see this and learn from you and learn that it's all about attitude. You know, your attitude is that you have to go out there, you have to work hard. And so rightly put, don't need to gatekeep the game. Let everyone enjoy it, have fun. It's a game that belongs to everybody, just like Pakistan belongs to everybody. Hijab, thank you so much for your time. Thank you so much, Hassan. It was an absolute pleasure to be here, and I'm very thankful for your continued support. Or I'm eternally grateful.